Welcome students, welcome to Sriram IAS to our new series 1 PYQ a day in which we are going to discuss on a rotation basis one previous year questions for mains 2025. We are going to discuss them in detail, in depth, which will provide you the necessary information, content, and most importantly, the mindset about writing mains questions. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके आने वाले मेंस के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होंगे। सो टुडे इज द डे ऑफ ज्योग्राफी एंड द टुडेज क्वेश्चन इज दिस। लास्ट ईयर 2024 मेंस दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 15 marker 250 words. The question is the groundwater potential of the Gangetic Valley is on a serious decline. How may it affect the food security of India? This is the question. It's a flat, easy, direct question. Before I jump into the explanation part, always remember very few basic things about the mains answer writing. First of all, absolutely you have to respect the word limit. No matter how good the content is, no matter how much you know about the question, जो आपको वर्ड लिमिट दी गई है आपको उतने में ही आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपने वो नहीं किया तो यूपीएससी विल पिनलाइज यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आपका पूरा पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं होगा। तो जो इसेंशियली अगर आप पेपर को उठा के देखें तो फ्रंट पेज पे ही उसमें लिखा हुआ होता है कि वर्ड लिमिट को अधेर करना है जहां भी मेंशन की गई है। तो वर्ड लिमिट को आपको हमेशा देखना है। दूसरा जो जेनरिक पॉइंट है वो ये है कि और आंसर देयर शुड बी सम क्वालिटीज इन मेंस आंसर। The answer's quality, basic qualities are it should be well structured, well organized in very simplified way. Simple language will also work. Obviously the explanation part, obviously वहां पे illustration होना चाहिए। जो भी आप argument दे रहे हो उसका substantiation होना चाहिए। Without that जो आपका आंसर होगा वो बहुत ही जेनरिक हो जाएगा। तो जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो उसको सब्सटेंटिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड ऑलवेज स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। लाइक इन दिस वन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हियर? दे आर आस्किंग, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगनेटिक वैली इज ऑन ए सीरियस डिक्लाइन। इट्स ए डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि डिक्लाइन हो रहा है। नाउ the right and correct way to deal with this question will be कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इसको सिर्फ मेंशन कर दो थोड़ा सा। There is no need for going for explanation of why it is on a serious decline, क्योंकि उन्होंने ये डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट एक दे दिया है। तो जो इंट्रोडक्शन है, आई फाइंड स्टूडेंट्स राइटिंग मेंस आंसर्स the most difficult part is introduction. I have seen many copies, many aspirants, they struggle with writing the introduction, and introduction is the face of your answer. तो जब आप आंसर राइटिंग के लिए जाओगे ज्योग्राफी में खासकर आपको नोटिस करना है यहाँ कीवर्ड क्या है? गैंगनेटिक वैली। जस्ट डिस्क्राइब दिस वैली। व्हाट इज दिस वैली? दिस वैली इज फ्लैट, fertile, alluvial soil. This valley is a flat, fertile, alluvial soil region stretching from Haryana to West Bengal. So you have to describe the geographical extent of the valley first of all. आपको geographical extent बता देना है। Very crucial, second part C, food security. Very crucial for our food security. If you see the detailed data, the net sown area, इसमें आप इसको अपने इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। द नेट सोन एरिया जैसे यूपी का है इज अराउंड 68% ऑफ द टोटल एरिया। इट्स नेट सोन एरिया। बिहार का अराउंड 54% ऑफ द इंटायर एरिया इज नेट सोन एरिया। सो नेट सोन एरिया इज ए टेक्निकल वर्ड, you can put it there in introduction itself. So absolutely critical for our food security. Why? Because it is flat, alluvial soil, fertile area, जहां पे net sown area बहुत ज्यादा है। तो it supports India's food security goals because it produces a lot of food grain. Soil की fertility यहाँ अच्छी है, climatic conditions appropriate है, तो overall food production यहाँ काफी ज्यादा होता है। Now
The second line will mention that how this food production is linked with what? Groundwater potential. क्योंकि एसेंशियली सवाल क्या है, आपसे फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहे हैं. ये तो उन्होंने डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट दे रखा है, कैसा है. Now groundwater potential is crucial for food production. Why? Because our farmers in this valley area extract a lot of groundwater for irrigation needs, particularly for crops like paddy and wheat. इनके लिए वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर को निकालते हैं, क्योंकि यहाँ कनाल सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं है. सो दे गो फॉर एक्सट्रैक्शन. नाउ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीरियस डिक्लाइन में, आप सिर्फ ब्रीफली पासिंग वे में मेंशन कर दो कि सीरियसली डिक्लाइन में क्यों है. सिंपल एक सेंटेंस में आपको लिखना है, बिकॉज अनसस्टेनेबल इसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है. एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर का अनसस्टेनेबल है. व्हाई अनसस्टेनेबल? Because the speed with which we are taking out the water, we are not recharging it at the same time. तो द रिचार्ज ऑफ द एक्विफर, जो ग्राउंड वाटर उसका होता है, उसका रिचार्ज कैसे होता है? रिचार्ज होता है रेनफॉल से, रिचार्ज होता है मैन मेड इंटरवेंशन भी होते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, वेटलैंड्स को रिस्टोर कर देना हो गया, इनके माध्यम से रिचार्ज होता है. तो वो वहां पे प्रॉब्लम है. एक्सट्रैक्शन आप अनसस्टेनेबल कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अनसस्टेनेबल है. दूसरा, ये जो बेल्ट है गगनेटिक वैली की, हाईली यहां पे पॉपुलेशन इस एरिया की बहुत ज्यादा है. एग्रीकल्चर में मैक्सिमम ये पानी यूज हो रहा है, और साथ साथ इंडस्ट्री को भी, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है. तो अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन हो रहा है और इन एडिक्वेट रिचार्ज हो रहा है. सिर्फ ये दो वर्ड आपको मेंशन कर देना है कि इट इज ऑन ए सीरियस डिक्लाइन. तो स्टार्ट कैसे करोगे? द गैग्नेटिक वैली, विच इज ए फ्लैट alluvial soil fertile region stretching from Haryana to West Bengal, is home to heavy or large population and a very fertile area for agriculture production. Now उसके बाद आप ऐड करोगे ग्राउंड वाटर वाली बात. ग्राउंड वाटर वाली बात को आपने ऐड कर दिया और आपने ब्रीफली पासिंग मेंशन दे दिया कि अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन है, इनएडिक्वेट रिचार्ज है. बाकी चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं करनी. क्यों? क्योंकि वो आपसे ये पूछ नहीं रहे. इट इज ए डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट, उन्होंने वो दे रखा है स्टेटमेंट. तो डोंट थिंक ऑफ कि आपको 50% टाइम वहां डिवोट करना है, 50% टाइम यहां पे देना है. नो, द रियल क्वेश्चन इज हाउ इट मे अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. सो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आपको दे दिया गया, इंट्रोडक्शन में आपने उसको कवर कर दिया. व्हाई वी यूज अंडरग्राउंड और ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन नीड्स? बिकॉज रेन फेड एग्रीकल्चर मोस्टली यहाँ पे, और कनाल सिस्टम इरिगेशन का, अश्योर्ड इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं, इसकी वजह से हम यूज करते हैं. नाउ वंस द ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग, हाउ इट विल इम्पैक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन? Your productivity of the land, crop yield will decline. Why it will decline? It will decline simply because paddy, wheat, these kind of crops demand water, and the source of water in these areas primarily the farmers are using groundwater. The moment it will decline, what will happen? The crop yield will decline. So this will be a serious thing for undermining our food security. The second part will be, first of all, is crop yield. The second thing vis-a-vis the food security of India will be that input cost for the farmer will increase. What input cost? So there are many types of input a farmer uses in agriculture, like fertilizer, like good quality seeds, like chemicals, pesticides, insecticides. There are a variety of inputs which are being utilized in agriculture, like labor also. Now in this case, water is also an input. So the moment the potential of groundwater will decline, what will happen?
the farmer will have to spend more money, more resources to extract the same amount of water from the wells. पहली चीज. दूसरा, they may have to seriously think about diversifying the water resources. जहां से वो पानी ले रहे होंगे, वो जो सोर्सेज हैं उनको वो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. तो वो एक सीरियस चैलेंज उनके लिए खड़ा हो जाएगा. इनपुट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा. नाउ दे विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट? मोर एंड मोर रेन फेड, मोर एंड मोर रेन फेड एग्रीकल्चर की तरफ वो चले जाएंगे. Because there are no canal systems properly and most of them are not located near rivers, so they'll have to depend on the monsoon or rainfall, which is very unpredictable. Because of what? Because of climate change. Serious crisis will develop in this case, so the input cost will also rise. Now what will happen the moment groundwater potential goes down? The availability of the per capita of water will also decline for allied sectors of the agriculture as well. तो जो allied sector है हमारे, horticulture, livestock rearing, floriculture, etc., they will also be impacted, particularly one specific sector, and that is fisheries. So fisheries are also a very important source, particularly inland fisheries. For what? For food security. That will also be impacted. ये भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो जाएगा. ये जो फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा क्या होगा? वहां पे जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी डिक्लाइन होगी. soil fertility will also be declined because more push will be there, more energy, more digging will take place and more resources will be spent to extract the groundwater. तो उससे आपकी soil की fertility को भी नुकसान होता है. ये एक बहुत बड़ा consequence होगा. pollution जो है वो तेजी से फैलेगा. इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को क्या होगा? ईल्ड कम हो गई, प्रोडक्टिविटी गिर गई लैंड की, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, अलाइड सेक्टर के ऊपर इफेक्ट है और सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होगी. जैसे ही प्रोडक्शन आपका कम होगा व्हीट एंड राइस का, नाउ द फार्मर विल हैव टू डाइवर्सिफाई. they will have to diversify and they may have to go to other crops which will demand less water. जैसे पंजाब में हुआ है, जैसे हरियाणा में हुआ है, ऐसे इस बेल्ट में भी हो सकता है. तो जो स्टेपल क्रॉप्स है हमारी, जो कि वीट है और पैडी है, राइस है, उनका जो नंबर है, वॉल्यूम है, वो गिर जाएगा. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस यहां से निकल के आएगा. साथ ही साथ व्हाट विल हैपन? national impact will be there because a lot of this food grain goes where? It goes to FCI godowns, Food Corporation of India's godowns, जिसके माध्यम से जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, वो कहां से चलाई जा रही हैं? यहीं से, इसी के अनाज से जो गोडाउन्स में जाता है. तो जो पूरी सप्लाई चेन है हमारी नेशनल लेवल पे, दैट विल बी impacted. The entire supply chain will be impacted. And that will be a serious crisis vis-a-vis food security of India. So you have to think in a multi-dimensional way. ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल गिर रहा है, उसको आपको लिंक करना है फूड सिक्योरिटी से. एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश, दिस इज ए ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पे है. तो आपको टेक्निकल वर्ड्स भी यूज करने हैं जो ज्योग्राफी में यूज होते हैं. नेट सोन एरिया फॉर एग्जांपल, यू हैव टू यूज इट. एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद डिस्क्राइबिंग दिस वैली. और आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स आर इन मेन्स, वर्ड्स आर resources. You don't have to devote too much of resources in explaining कि क्यों ये डिक्लाइन हो रहा है. उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट यू डोंट हैव टू डू इट. जस्ट राइट वेरी ब्रीफली बिकॉज दिस इज ए डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट. वो आपसे इसका जवाब नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ. They are asking simply how it may affect the food security of India. So 250 words will suffice that you give a proper introduction. In passing, you will mention why it is declining, and then you will start your real answer ki why the food security of India will be affected by it. This is the issue.
Now, apart from body is always easy. Body, I find many aspirants saying that body is always easy to write. The issue arises in introduction, issue arises in conclusion. So how would you conclude this answer? Would you give a lengthy way forward into it, or a lengthy recommendation part into it? Are they asking you, or do you have the luxury of writing so many words, or time to write so many words in the answer sheet? No, you don't have the time, you don't have the words. So आपको conclude बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से करना है. Conclusion is not summary. Always remember, conclusion is not summary. जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको summarize कर दिया. No, you will write by saying that yes, the decline in the groundwater potential in the Gangetic Valley will have serious nutritional and food security challenges for India. आप आगे लिखोगे, थोड़ा सा मेंशन दोगे कि बाय प्रमोटिंग, यू कैन प्रमोट, यू कैन सजेस्ट बाय प्रमोटिंग व्हाट, you will promote what exactly. Conclusion part is always very important. Conclusion is not summary. So you will write what could be said about this issue. Promoting what, क्या promote करने के लिए कहा जा सकता है इसमें. तो first of all, in conclusion, not in this way, you will write in sentence format that by promoting sustainable agriculture practices, because this issue is linked with what, agriculture. तो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल नीचे जा रहा है, उसको हमें बैलेंस आउट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है. Sustainable agriculture practices. You don't have to describe these practices like water use efficiency, better water use efficiency, which is being achieved through what, drip irrigation हो गया, उसके थ्रू अचीव किया जाता है. तो वाटर यूज इफिशियंसी जो कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का हिस्सा है. आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो क्रॉपिंग पैटर्न को अपने. वाटर हेवी जो क्रॉप्स हैं जैसे पैडी है, उसकी जगह यू कैन आस्क द फार्मर और suggest the farmer or incentivize the farmer to go for many other crops, because in the era of climate change what you need is climate resilient crops which are nutritious as well. तो वो आप कर सकते हो, क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना. और इसके साथ साथ एडिक्वेटली रिचार्ज करना हमारे एक्विफर्स को, हमारे ग्राउंड वाटर जो पोटेंशियल है उसको. कैसे रिचार्ज करोगे? तो रिचार्ज करना बहुत जरूरी है. रिचार्ज, हाउ वुड यू डू इट? So recharge can be done by restoring the blue spaces of the area. Blue spaces means wetlands हो गए. प्रॉपरली रिचार्ज आप कर सकते हो. दूसरा, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टेक्निक्स को प्रमोट कर सकते हो. एग्रीकल्चर में यू कैन इंसेंटिवाइज द वाटर यूज देयर ऑल्सो. सो रिचार्ज करके आपको काम करना है. इसमें आप गवर्नेंस वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो. जो रेगुलेशंस हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के, वहां पे रेगुलेशंस को इफिशिएंटली, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. अब इंडिया में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेके लॉ है, वो एक ईजमेंट एक्ट करके कानून है ऑफ 1882, अंग्रेजों के टाइम का कानून है. द लॉ इज ब्रिटिश एरा 1882. द मॉडल लॉ इज पेंडिंग, नो स्टेट गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग इट. So there is a need to go for model laws vis-a-vis groundwater extraction. So this is how you will conclude. You will mention कि yes, groundwater जो decline हो रहा है उससे सीरियस न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस इंडिया के लिए खड़े हो सकते हैं. लेकिन आगे ये लाइन पे आप लिखोगे कि थ्रू प्रमोटिंग और सजेस्टिंग दीज मेजर्स यू विल राइट दैट बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्सिफिकेशन, adequately recharging them through rainwater harvesting and restoring wetland systems or blue spaces, and proper effective governance through reforming the old laws, this problem can be adequately addressed.
वर्ड ब्रीच नहीं होने चाहिए। 250 वर्ड का आंसर 250 वर्ड में ही आपको लिखना है। अगर वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट ना होती तो वहां पे मेंशन ना की गई होती। नाउ यू विल फाइंड दैट दीज काइंड ऑफ आंसर्स पीपल राइट इन essay format. There are so much of that content available everywhere. People will write in essay format. आपको essay format में नहीं लिखना। 250 words में जो essence है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन का essence है, उसको एड्रेस कर लेना है। And one of the issues which challenges the aspirant is that don't get the hold of the question. Just spend some seconds in understanding the demand of the question. Many of you would write कि half आपने इसके लिए दे दिया, half आप इसको दिख रहे हो। No, declaratory statement है वहां पे। There is no need to explain fully that. Just mention it in a introduction part. थोड़ी सी 2 से 3 लाइन आपको लगानी है, बाकी जो कोर है आपके आंसर का वो ये है। So that is how your answer will be well structured, organized, innovative, imaginative, and contemporary. And you will perform better compared to your competitors. So keep writing, keep revising, and cover the maximum syllabus while you can, and prepare yourself for the UPSC mains 2025, and keep watching this series. Next day there will be a next subject and a new question. Thank you for giving me your time. All the best.